हैंडलिंग चैलेंजिंग कैटरैक्ट हमारे सिंपोजियम का नाम है, और इसमें हम पहले जो कवर करने जा रहे हैं वो है लाइक विंटर्स फ्रॉस्ट अपॉन अ लीव। जैसे वहां कुहसारों में दरख्तों के पत्तों पर बर्फ के जर्रात गिरते हैं, तो उसी तरह एक मटेरियल आयरस पे, लेंस पे, मैशवर्क पे जम जाता है, जिसको हम PXS कहते हैं, Pseudoexfoliation Syndrome. We are going to discuss thinking beyond pupil size and PXS Phaco surgery, like winter's frost on a leaf. तो ये जो हम सिंपल देखते हैं कि प्यूपिल डायलेट नहीं हो रही और एक स्क्रोल से कैप्सूल पे नजर आ रहे हैं, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. The real story is much more complicated than just undilating pupil. The pupil is merely the gatekeeper. The true enemy lies hidden in the shadows of the ciliary body. So poor dilation is a symptom, not a disease. The real challenge is zonular instability. The zonules are weak in these cases, like frayed ropes holding a heavy bridge. Pseudoexfoliation syndrome is a systemic elastosis. The zonules are brittle and prone to unzipping, weakened by proteolytic enzymes, often asymmetric in their degradation. So a small pupil protects the weak zonules from stress, and dilating it reveals the real instability. So if we detect pseudoexfoliation syndrome, we need to think beyond pupil size. So before the blade touches the eye, the diagnosis must be made clearly, and one needs to anticipate the hidden problems which one is going to face during the surgery. One is phacodonosis, the lens that shivers. The AC depth is increased, and the anterior chamber will be asymmetric between two eyes. 1 millimeter difference between two eyes always rule out subluxation and zonular weakness. Iridodonosis, the trembling iris, and IOP spikes, because that material not only lets the pupil dilate fully, but also raises the IOP quite often. So don't rush to the theater. Listen first to what the signs speak. Always examine undilated first, then dilate, and check for the double ring sign. Management of the small pupil, we all know we have the iris hooks, and we need to have stepwise approach. We always use diluted adrenaline with xylocaine first, known as pharmacological dilation. We can consider viscodilation with hyaluronic acid like Helon GB, and we can consider mechanical expansion. आपने अक्सर वो मैनूवर की होगी जिसमें हम जिसको प्यूपिल स्ट्रेचिंग कहते हैं, कि सिंपली आप एक कुगलन हुक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो एच शेप्ड बना होता है एंड से, और उस एच की वजह से इट कैन पुश, इट कैन पुल. और एक और इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोफेसर महफूज ने डिजाइन किया है, जिसको डंबल हुक कहते हैं. वो डायलर की तरह है, लेकिन उसके एंड पे
दो छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं। उन बॉल्स के दरमियान में जो सल्कस बनता है उसको आप चारों तरफ किसी भी जगह से आयरस को होल्ड करने के लिए एट्रोमेटिकली यूज कर सकते हैं। तो 2 डंबल्स ले लें या 2 कुगलन्स हुक ले लें और 180 डिग्रीज अवे आयरस को स्ट्रेच कर लें। इट्स अ वेरी यूजफुल मैनूवर। तो बिफोर एम्बार्किंग अपॉन आयरस हुक्स हम उसको डाइल्यूटेड एड्रेनालिन की ट्राई दे दें, हम उसे विस्कोडाइलेशन देख लें और हम स्ट्रेच करके भी देख सकते हैं। और स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, थोड़ा सा स्फिंक्टर टियर होगा। तो बट वी हैव सीन कि देखने में लगता है कि प्यूपिल हुक बड़ी ट्रॉमेटिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने हुक से भी जो डायलेट किया था तो स्फिंक्टर टियर उसने भी कर दिया। जो आयरस आप आयरस हुक से भी डायलेट करते हैं वो प्यूपिल भी कभी नॉर्मल प्यूपिल की तरह बाद में नहीं होती। तो इस तरह अगर आप जेंटली स्ट्रेच कर लें तो आप वो जो आपको 4 पैरासिंथेसिस करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा 15-20 मिनट लगेंगे, अगर वो स्ट्रेचिंग से और एड्रेनालिन से डायलेट हो जाए तो हम उस ट्रॉमा से और वक्त के ज़िया से बच सकते हैं। और फिर आगे जब आपने डायलेशन करनी है तो उसमें ओएसएस रिंग भी है, मेल्यूजिन रिंग भी है, आयरस हुक्स भी हैं। तो पुअर मैन्स टूल हमारे पास तो पड़ोसियों की बनाई हुई आयरस हुक्स हैं जो कि आसान है। और फिर ऐसा जब आप सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम को डायग्नोज कर लें तो बेहतर है कि आपके पास टेंशन रिंग भी अवेलेबल हो, क्योंकि ये पूरा सिंड्रोम है जो कि जोन्यूल्स को वीक करता है और जोन्यूलाइसिस कॉज करता है। और आपको अभी पहले मैंने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें रिंकल्स बने हुए थे कैप्सूल पे। आप कैप्सूलर रेक्सेस शुरू करने लगे और उस पे स्पाइडर वेब साइन आ जाए, उसके ऊपर बहुत सारे रिंकल्स पैदा हो जाएं, तो इट्स अ वार्निंग साइन कि इसके जोन्यूल्स वीक है और इसके अंदर फेकोडोनेसिस का इम्कान और कॉम्प्लिकेशंस का इम्कान ज्यादा है। तो ऐसे केसेस के लिए आपके पास टेंशन रिंग भी अवेलेबल होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और हत्तुल इम्कान हम कोशिश करें कि मैं कहता हूं कि रेक्सेस शुड बी स्मॉलर देन 6 मिलीमीटर। तो हमारे प्यारे दोस्त एजाज साहब कल उसको कोट कर रहे थे कि मजरी कहता है कि पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट में रेक्सेस छोटा होना चाहिए। रेक्सेस छोटा 6 मिलीमीटर से रखना है हर केस में। अगर आपका रेक्सेस 6 मिलीमीटर से बड़ा है तो एक तो आप ऑप्टिक को प्रॉपर कवर नहीं कर पाएंगे, दूसरा खुदा न खास्ता आपको कोई पोस्टीरियर कैप्सूल का कंप्रोमाइज हो गया तो आप ऑप्टिक कैप्चर नहीं कर सकेंगे, जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटी है इन केस देयर इज अ पोस्टीरियर कैप्सुलर कंप्रोमाइज। तो रेक्सेस का साइज 5 से ज्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए। हर जगह हमारी यही डिजायर होती है। फ्लूइडिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि जोन्यूल्स वीक हैं और कैप्सूल की नेचर भी डिफरेंट होती है। सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम में it behaves like kind of pediatric capsule which is very elastic and it keeps on stretching and you need to change your angles to get it in proper shape. तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि लार्ज करना है बट नॉट मोर देन 6, 5.5 to 6 is our aim. So a small rexus limits surgical maneuvers and increases risk of capsular phimosis later. अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में कैप्सुलर फाइमोसिस का रिस्क भी बहुत ज्यादा है रेगुलर कैटरैक्ट की निस्बत। और जोन्यूल्स पहले ही एक डिजीज का शिकार हैं और उनकी जब कैप्सुलर फाइमोसिस भी साथ होगी
तो फाइमोसिस कैप्सूल को जब अंदर खींचेगी तो जोन्यूल्स का डेहिसेंस और बढ़ जाएगा। इसलिए हमने उसको बहुत 5.5 मिलीमीटर से छोटा हाथोलिम का नहीं होने देना, ताकि हम फाइमोसिस वाले साइड इफेक्ट से भी बच सकें। तो फेको पैरामीटर्स का क्या करना है? मेरी प्रेजेंटेशन थी कल परसों, स्लो मोशन फेको। तो स्लो मोशन फेको की तरफ चले जाना है हमने वाटर हाइट थोड़ी सी कम कर देनी है, लो फ्लो, लो वैक्यूम, लो फेको पावर एंड मोर पेशेंस इज द आंसर। और चैम्बर को हमने फ्लक्चुएट नहीं करने देना, और स्कल्पटिंग नहीं करनी, चॉपिंग ज्यादा करनी है। चॉपिंग क्यों प्रेफर्ड है? चॉपिंग में आपका नॉन डोमिनेंट हैंड और सेकंड इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्टिव होता है बनिस्बत स्ट्रेस ऑन द जोन्यूल्स बिकॉज ऑफ योर लेटरल मूवमेंट्स। तो इसलिए आपने चॉपिंग की कोशिश करनी है और न्यूक्लियस को डिवाइड करने की कोशिश करनी है विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन जोन्यूल्स। जब आप चॉप करके न्यूक्लियस को जेंटली इमल्सिफाई कर लें तो केयर स्टिल कंटिन्यूज। जो आपका कॉर्टेक्स है उसको भी आपने रेडियली पुल नहीं करना। रेडियल पुल क्या है? तो प्रिंसिपल क्या है कॉर्टिकल एस्पिरेशन का? एंगेज, डिटैच एंड सक। एंगेज, do some to and fro movements, detach, and then apply the suction, whether with the syringe or in case of automated irrigation cannulas by pressing the foot switch. अब जो उसमें आपने डिटैच करना है तो आमतौर पर हम सेंटर ऑफ प्यूपिल की तरफ पुल करते हैं, लेकिन जोन्यूलर कंप्रोमाइज वाले केसेस में आप टेंजेंशियल पुल करेंगे। आप उसको डिटैच करने के बाद रेक्सेस के पैरेलल पुल करेंगे मार्जिन के, ताकि जो सेंटर की तरफ खींचने से वहां जोन्यूल्स पे स्ट्रेस आता है वो ना आए, और आप उसको टेंजेंशियल पुल करके मिनिमम स्ट्रेस के साथ डिटैच कर लें और फिर सक कर लें। तो सर्जरी इज नॉट द एंड। The PXS process continues progressively. तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जब सबलक्सेशंस और वीक जोन्यूल्स को टैकल कर रहे हो, तो जब प्रेजेंटेशन करता हूं मैं सबलक्सेशंस के मौजू पे या डिसलोकेशंस के मौजू पे, तो उसमें सबसे पहली स्लाइड हमेशा होती है क्लासिफिकेशन की। एक है सेवेरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो आप करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड लेस देन अ क्वाड्रेंट, मॉडरेट लेस देन 2 क्वाड्रेंट्स, सीवियर मोर देन 2 क्वाड्रेंट्स। तो ये तो सबलक्सेशन की क्लासिफिकेशन हो गई। तो सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम में आपने क्लासिफाई कर लिया इसी तनाजुर में जोन्यूलर इंस्टेबिलिटी को, कि सेवेरिटी कितनी है, कितने क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा ये कि जब आप सबलक्सेशन को क्लासिफाई करते हैं तो दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो नेचर ऑफ सबलक्सेशन है। नेचर क्या है? 2 किस्म की सबलक्सेशन या डिसलोकेशन या पार्शियल डिसलोकेशन होगी, एक प्रोग्रेसिव और दूसरी नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या है? जैसे मार्फोनाइड है, उसने प्रोग्रेस करना है। जैसे सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम है, उसने प्रोग्रेस करना है। और नॉन प्रोग्रेसिव ट्रॉमेटिक, कि अब एक क्वाड्रेंट में जोनियोलाइसिस हो गया, तो अगर आपने हुक लगा के, टेंशन रिंग लगा के अपने लेंस को सेंटर कर लिया है, तो ये सबलक्सेशन प्रोग्रेस होने वाली नहीं है, तो इसको आप आराम से ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मॉर्फोनाइड सबलक्सेशन को टैकल किया, हुक लगा के आपने अच्छा रेक्सेस भी कर लिया, आपने टेंशन रिंग डाल के बैग को सेंटर कर लिया,
आपने लेंस आप डालना चाह रहे हैं, आपको पता है लेंस सेंटर हो जाएगा, लेकिन मार्फोनाइड सबलक्सेशन में आप उसको फिक्सेशन के बगैर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ जो वक्ती रिजल्ट आपको मिला है सेंचुरेशन का, उसी को काफी समझा, तो साल के बाद 2 साल के बाद वो पूरा टेंशन रिंग, द कैप्सूल एंड द लेंस कॉम्प्लेक्स विल डिसलोकेट because the subluxation is progressive in nature. तो यहां पे सूडो एक्सफोलिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां तो आपने मार्फोनाइड या होमोसिस्टिन यूरिया या व्हील मर्चेसानी सिंड्रोम लेबल किया एंड यू नो कि ये प्रोग्रेसिव है। सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम में अगर माइल्ड है और जोन्यूल्स स्टेबल हैं और आपको फेको करने में कोई खास दुश्वारी नहीं हो रही, तो आप उसको रूटीन केसेस के तौर पर मल्टीपीस आईयूएल डाल के एक्रिसॉफ्ट मल्टीपीस या कोवा का रिसेंटली प्रीलोडेड मल्टीपीस अवेलेबल है, वो डाल के तो यू कैन लीव इट एज सच, क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेशन है इसमें। लेकिन अगर कोई मार्क्ड सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम का केस है और उसमें 1 या 2 क्वाड्रेंट में सबलक्सेशन हो चुकी है, तो उसको मैं मार्फोनाइड की तरह टैकल करूंगा। उसकी मैं फेको तो जोन्यूल्स हुक्स की मदद से मुकम्मल करूंगा। आईयूएल को सेंट्रेशन के लिए कैप्सूल टेंशन रिंग भी डालूंगा, लेकिन उसके साथ स्टिचेस या हैप्टिक एक्सटर्नलाइजेशन की मदद से आईयूएल को टच भी लाजमी करूंगा। So this is the importance of judging and taking your decision about lens subluxation. Dear viewers, you can notice in this video that surgeon was able to perform rhexis with this relatively small pupil, but as he starts emulsifying the cataract with Phaco handpiece, notices that the pupil is getting smaller, so the plan is changed. The anterior chamber is inflated with methyl cellulose and a little mechanical dilation is achieved. Then 3 paracenteses are fashioned, 2 in the inferior quadrants and 1 already fashioned paracentesis for rhexis is going to be used. While applying the squint-hex, one needs to be vigilant that they don't engage the capsule, and while pulling, one should not over pull it. Even if it has engaged capsule, if you pull it gently, it will not complicate. The 4th hook is being inserted and tied. So the desired pupil expansion is not ideal, but I preferred not to go for separate openings because we have to use the second instrument as well. Now I am trying to mechanically crack the nucleus. I am partially successful under cover of viscoelastic. One needs to be vigilant because overdoing these maneuvers sometimes also complicates. So now with patient approach, the phaco needle goes in and very soon we are able to prolapse one of the edges of the nucleus and the phaco emulsification ensures.
and bit by bit dividing it into further smaller pieces. The nucleus is emulsified. As the rhexis is relatively smaller in size, so the phaco handpiece should not be used to go in the furnaces and to explore. The second instrument needs to be more active, and the phaco needle better stays in the middle, and we feed it with the perinucleus, as you can notice, and the phaco emulsification is complete. And now it looks like that the intranasal hook has engaged capsule, but as it's not fully pulled, so the disaster has been averted luckily. And I prefer to complete irrigation aspiration with coaxial phaco handpiece, and after completion I decide to get rid of capsule hooks, because we have seen that if the capsule hooks are there for about 5 to 10 minutes, generally the pupil will stay dilated for the rest of the procedure. And to make it easy for further manipulations, I remove all the hooks and we rotate the hooks out. Then we can easily take them out without damaging desmoids or endothelium. And we are just polishing and completing the irrigation aspiration, followed by injection of OVD. And here comes preloaded crystallines EAZY, easy IUL, excellent IUL, hydrophobic with dual haptic design, goes smoothly in through 2.75 millimeter in CN, and in the end, just to signature it, there is little iris prolapse, but taken care of easily. The wounds are hydrated and the case is closed. بسم الله الرحمن الرحيم. The author carries no financial interest in this video. Video title: In situ bag repositioning with double haptic scleral fixation of multi-piece acrylic foldable PCIOL. Purpose: to present in situ bag repositioning with double haptic scleral fixation of multi-piece acrylic foldable PCIOL. Setting: Wapda Teaching Hospital Complex and Central Park Medical College, Lahore, Pakistan. Methods: a middle-aged male presented with subluxated capsular bag with multi-piece acrylic foldable PCIOL secondary to pseudoexfoliation syndrome. Pre-op visual acuity was counting fingers and improved to 6/18 with aphakic correction. In situ repositioning with double haptic scleral fixation of IOL was planned under local anesthesia. Partial thickness scleral tunnels was prepared at fixation site. Two paracentesis were performed. Anterior chamber was formed with injection methyl cellulose.
Transscleral 10-0 proline fixation suture was passed 1 mm behind limbus. 27-gauge bent needle and 10-0 proline straight needles were used for this purpose, applying railroad technique, encasing the IOL haptic. Suture needle was retrieved at opposite limbal paracentesis using viscocannula as a guide. Suture was given a second pass. 10-0 proline needle coming through paracentesis while 27-gauge syringe needle entered through fixation suture site. Thus suture passage was repeated in opposite direction but anterior to the IOL haptic this time. Haptic bag complex was dialed in position at ciliary sulcus by applying gentle traction on the sutures. The fixation suture ends were tied to each other and cut ends buried inside the scleral tunnel. Anterior core vitrectomy was performed. Second fixation site was fashioned 180 degrees apart. Similar procedure was repeated with other pole of haptic bag complex. Haptic bag complex was dialed in position at ciliary sulcus by applying gentle traction on the sutures. The fixation suture ends were tied to each other and cut ends buried inside the scleral tunnel. Conjunctival flap was reapproximated at limbus. Suture knots were again rotated inside the corneal stroma. Wounds were hydrated. Results: the IOL bag complex was well centered at the end of the procedure and remained so to date, that is 3 months post-operatively. The BCVA is 6:9 with quiet eye. These are the post-operative slit lamp pictures. You can notice the well-centered lens bag complex and a quiet eye. Conclusion: in situ bag repositioning with double haptic scleral fixation of multi-piece acrylic foldable PCIOL is a viable and effective option for such cases. Using this technique, one does not need to retrieve the IOL or its haptics outside of the eye. So look beyond the narrowing gate where fragile strings decide the fate. With gentle hand and vision clear, we banish darkness and conquer fear. So thank you very much.